Good morning, everyone. Welcome to your computer class. For today, our topic is Database Management System, which is DBMS. All right. So, for classwork, I'm going to explain you this chapter while homework is at the end of this video. Okay. So, do watch this video till the end. All right. So, let's get started. So this is DBMS, that is Database Management System. Okay, so data is a collection of facts and figure. So what is data? Any fact and figure, okay, that contains some useful information is called data. Okay, so for example, based on the marks obtained by students, okay, of a class, you can find out the name of the students who top the class. Like for an instance, here some marks are given. Okay, if you want to see the student who has topped the class, okay, you can view it from here. So this is the data. All right. So what is a database? A database is an organized collection of data which is related in some aspect. Okay, so databases, it is a collection of data. Okay, so this is data, this individual is data, and the collection of this is called database. Okay, database is a collection and presentation of information that one can easily retrieve. Okay, so ये डेटाबेस एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे हम किसी भी टाइम पे रिट्रीव कर सके. व्हाट इज़ रिट्रीव? मतलब जिसे हम किसी भी टाइम पे निकाल सके. ओके, लाइक फॉर एन इंस्टेंस, मैं आज इसमें इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ और मुझे 1 साल बाद देखना है कि मनोज के कितने मार्क्स थे. सो मैं इसको यहाँ से चेक कर सकती हूँ simply by just the name. Okay, name or roll number. So this is database. All right, so these are the elements of a database. So elements are some important points about database. Okay, the elements are which makes the database, जो जिससे database बनता है. Okay, so first thing is table. क्योंकि इसमें हम डेटा को सेव करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं. सो ये ऑफ कोर्स ये बात है कि ये टेबल की फॉर्म में होता है. सो हियर यू कैन सी दिस इज टेबल, सेकंड इज फील्ड, ओके, and third one is record. So what is table? A table is the primary unit of storage of data in a database. So it is the primary unit. Okay, the data in a table is organized in the form of rows. What are rows? These are rows, okay, also called records. So जो rows के form होते हैं, like this one is a row, okay, this is also called a record, and column, which is field. Okay, so this is field or column. So this whole दोनों के combination से, that is rows and column के combination से table बनता है. All right, so here you can see in the example, for example, in the table titled result shown below, the marks of 2 students are recorded in the form of rows and columns. So these are the marks of the students. All right, so let's head on to our second page, which describes what is a field. Okay, so what is a field? A field, as already I have mentioned, that field is the column. So this is this marks, percentage, name, and roll number is field. All right, so field is a column inside a table that contains only one specific category of information. Like for example, ये सिर्फ marks को contain करता है और कुछ भी नहीं. Okay, next is record. A record is a collection of all the fields in a table for a particular data. Okay, so record क्या है? Record is all the information of roll number 2. So roll number 2 की पूरी इंफॉर्मेशन इसमें आती है. ओके, सो इससे एक चीज़ और पता चल सकती है कि फील्ड जो है वो एक ही टाइप का हो सकता है. लाइक यहाँ पर क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में है और यहाँ पे ये न्यूमेरिक फॉर्म में है. सो फील्ड कैन बी ओनली इन वन लैंग्वेज. ओके, मतलब पूरे में एक ही रहेगा, वाइल रिकॉर्ड कैन बी डिफरेंट. ओके, next is, let's move on to our next topic, which is database management system. Okay, so this was table, this was field and record. Now what is DBMS? A database management system is a software that helps to manage large amount of data. So it is a software which helps you to manage large data. It involves creating, modifying, deleting, and adding data in a database. So how it helps? It helps us to create a table, okay, create data, delete the data, or make changes in that data.
Okay, so DBMS allows users to create their own database according to their requirements. So how it helps? It helps everyone to make their own database. Okay, so types of DBMS, there are 4 types of DBMS, which are hierarchical, network, relational, and object oriented. Okay, so out of the 4 types, the most widely used DBMS is the relational database management system. Okay, RDBMS. In RDBMS, we have multiple tables, and the relationship between these tables can be created using common fields. Okay, so um, so we have multiple tables here, and the relationship between these tables, okay, can be created using common fields. So it can be created using the same fields. All right, so next is functions of DBMS. Okay, so these were the function, this is the function of DBMS. A database may consist of multiple files. Okay, it can contain multiple files. A DBMS provides centralized control over multiple files. Okay, so using DBMS, what we can do, we can control the multiple files all together at one field. Okay, eliminating data redundancy, data inconsistency, etc. Okay, so अगर डेटा गलत है या डेटा को चेंज करना है तो वो हम एक साथ ही एक ही जगह पर कर सकते हैं. इसका ये सबसे बड़ा यूज़ है. ओके, सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ DBMS is it eliminates data redundancy. Okay, so redundancy means duplication of data. What does redundancy means? इसका मतलब होता है duplication of data. ओके, दैट इज़ किसी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अगर 2 बार आ जाए तो वो डुप्लीकेट है. ओके, दैट इज़ रिडंडेंसी. सो ये ऐसे डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी और ईजिली रिमूव करता है. ऑल राइट, सेकेंड वन इज़ मोर कंसिस्टेंसी इन डेटा. ओके, सो दिस मीन्स दैट इफ अ डेटा आइटम दैट अपेयर्स मोर देन वंस in a database is updated, DBMS automatically updates each occurrence of that particular data. Okay, अगर एक ही पॉइंट के बारे में हम बार बार इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो DBMS अपने आप ही उसमें चेंजेस करता है. ऑल राइट, इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी. इसमें हमारा जो डेटा है वो भी सिक्योर्ड रहता है. ओके, नेक्स्ट इज imposes integrity constraints. DBMS maintains the integrity of a database. Okay, constraints are imposed on data items so that correct data is entered into the database. Okay, so इसमें हम सिर्फ correct data ही डाल सकते हैं. इसमें इसीलिए इसे integrity constraints का है. Okay, next is इट प्रोवाइड्स मल्टीपल व्यूज़. ओके, ये बहुत मल्टीपल व्यूज़ प्रोवाइड करता है. DBMS ऑफर्स मल्टीपल व्यूज़ फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूज़र्स. मतलब हर यूज़र्स के व्यू पॉइंट को रखते हुए ये मल्टीपल व्यू शो करता है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा. सो हम डेटा को शेयर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट एनफोर्सेस स्टैंडर्ड्स. ओके, इट as you have learned earlier, data in a database management system is stored and maintained centrally. Okay, so centrally मतलब किसी एक particular जगह पर पूरे के पूरे information store होती है. Okay, so thus certain standards in the representation of data can be enforced easily in a DBMS. Okay, so अगर कुछ standards रखने हो हमें तो हम एक ही जगह पर changes करेंगे और वो सारी की सारी files में changes करता है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी. अगर कोई हमारा डेटा गलती से इरेज हो गया है तो हमें बैकअप और रिकवरी की भी फैसिलिटी इसमें मिल जाती है. ओके, फैसिलिटीज़ फॉर बैकअप ऑफ डेटा इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कंप्यूटर सिस्टम फेल्स इन द मिडल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अपडेट प्रोग्राम. लाइक अगर आप अपना प्रोग्राम अपडेट कर रहे थे और उसी टाइम पे आपका कंप्यूटर फेल हो गया, सो आप उसको रिकवर कर सकते हैं. ऑल राइट, let's head on to the next. This is classwork for you all. You have to do this, unscramble the jumbled words. Okay, next is points to remember. A database is an organized collection of data which is related in some aspect. Okay, so इसमें ऐसा data होता है जो कुछ ना कुछ aspect में related होता है एक दूसरे से. A database consists of 3 elements which are table, field and record. A table is the primary unit of physical storage of data in a database. Okay, यही primary unit है, मतलब यही उसकी base है.
ओके, इसके बिना कोई भी DBMS नहीं हो सकता. The data in a table is stored as rows, which are records, and columns, which is fields. All right. The, the DBMS is a software that helps to manage a large amount of data. It involves creating, modifying, deleting, adding, and storing data in a database in such a way that the users can retrieve and manipulate data efficiently and quickly. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है और इसे हम इजीली क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट और ऐड कर सकते हैं. एंड हम किसी भी टाइम पे इस पे इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ DBMS विच आर हायरार्कियल, ओके, network, object oriented, and relational. In a relational database management system, relationship can be created between the multiple tables using common fields. Okay, so common fields को use करके बहुत सारी tables में हम एक साथ ही relationship show कर सकते हैं. All right, so that was all for your classwork. Okay, this was the chapter explanation and you have to do this in your notebook. While for homework, you have to do tick the correct answer, fill in the blanks, and match the columns. All right. So that's all for this class. Thank you and have a wonderful day.